ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहाकातराजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयामुनिमानुतस्मि। अङ्गश्यामलिवच्छटाभिरवितो मन्दीकृते इन्दीवरम् जाड्यञ्जागुडरोचिषा विदधतम् पट्टाम्बरसश्रियम्। वृन्दारण्यनिवासिनां हृदिलसदा माविदामोदराम् राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजम् ध्यायेन् दामोदरम्। भक्त्या विहीन अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयेस्तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। हा देवी काकुवर्गद्गदयाद्यवाचा जाचे निपत्यबुविदण्डवदुद्भटार्ति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे परमानंद गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा भिक्षा करता हूं। तत्पश्चात मेरे रूपानुग गौड़ीय गुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा भिक्षा करता हूं। उपस्थित समस्त भक्त सज्जन वृंद मातृवृंदों के चरण में मेरा यथायोग्य प्रणाम। We speak something from Srimad Bhagavatam. It is not possible to completely speak Bhagavatam because Bhagavatam is very vast, like Krishna himself. In Chaitanya Charitamrita, it is told Krishna Tulya Bhagavata Vibhu Sarvasraya. प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे
Bhagavad Krishna Tulya, as good as Krishna himself. Vibhu. Vibhu means he is unlimited. Prati slok, every slok, every syllable has so many meanings. Like Krishna is ever expandable. Like Vishnu. Srimad Bhagavatam also like this. ऐसे भागवतम अनंत असीम अगाध भक्ति के समुद्र है. जहां भक्ति है वहां ज्ञान वैराग्य स्वत विद्यमान है. तो भागवत क्या है? भगवान को धारण करने की शक्ति जिनमें है. भगवान को स्वयं पूर्ण रूप में धारण करके विद्यमान है. वही श्रीमद् भागवत. Bhagavad is that book which completely contains Supreme Lord himself. It is not actually book. Bhagavad is not a book. Bhagavad is Krishna himself and manifested himself as book form and manifested himself as devotees. Those who are pure devotees, they are also called Bhagavata, Mahabhagavata. तो भागवत कैसे श्रवण करना चाहिए? जाओ भागवत पढ़ वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण. भागवत को जाकर वैष्णव के स्थान में, शुद्ध भक्तों के चरण में बैठ करके भागवत श्रवण करना चाहिए. और एकांतिक रूप में ये चैतन्य महाप्रभु के शरणापन्न होना चाहिए. क्यों? कि भागवत के तात्पर्य को ये जगत में प्रदान करने के लिए ये चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं राधा भाव सुगलित होकर इस जगत में भागवत का गूढ़ तात्पर्य को प्रचार किया. यदि भागवतम is as good as Krishna, to understand Bhagavatam is not easy. If you want to understand Bhagavatam, then you have to approach a pure devotee. You have to hear Bhagavatam from a pure devotee. And the pure devotees, they have realized Bhagavatam, and also you have to take exclusive shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu. रोज़ मुझे बनेगा. ओ, इस टाइम मुझको बनेगा. Because pure devotees, Bhagavad is manifested in two forms. One is the Bhakta Bhagavat and Vyakti Bhagavat. The person Bhagavat and the book Bhagavat. It's not only mere words. Krishna himself. Krishna wanted to manifest himself in this world. The incarnation of Krishna. Krishna incarnated here and did so many pastimes. In Mahabharata and so many pastimes he did. But that is not enough to understand Krishna. कृष्ण ने यहाँ जगत में आविर्भूत होकर के बहुत सुंदर सुंदर लीला उन्होंने किया ब्रज में. लेकिन कृष्ण अपने आप को उस लीलाओं के द्वारा पूर्ण प्रकाशित नहीं हुए. वो पूर्ण प्रकाशित किसमें हुए हैं? ना भागवत के द्वारा. अगर जगत में भागवत अवतीर्ण नहीं होता तो कृष्ण को लोग भूल भी सकते. तो भगवान अपने आप को पूर्ण रूप में जब प्रकाशित करने के लिए जगत में भागवत को अवतीर्ण किया. कृष्ण वांटेड टू मैनिफेस्ट एंड रिमेन इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज इन द फॉर्म ऑफ भागवत. माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण. Because the jiva, the living entities, since time immemorial, they're fully in the trap of Maya,
They have no knowledge, no remembrance of Krishna. That's why Krishna manifested himself in the form of Veda, Upanishad, then Puran. Veda is the original source of all knowledge, and Upanishad more simplified form. In Upanishad is very specific and how to understand, come to close to Krishna, very simple way. And Puranas in the story form who fulfill the meaning of Vedas, Upanishads, that is Purana in story form. And then further, the explanation, the essence of all Puranas is Srimad Bhagavatam. And without Bhagavatam, Krishna would not fully manifest in the heart of Jivas. Would not understand. Krishna is always present. That's why Shastra mein kaha gaya hai, Krishna Sudhama Upagate Dharma Jnana Divisaha. Krishna Sudhama Upagate Dharma Jnana Divisaha. Kalo Nashta Drisam Esa Puranarka Adhuna Uditaha. कृष्ण सुधाम उपज कृष्ण सुधाम को चले गए. कृष्ण स्वयं भगवान उनके साथ साथ धर्म ज्ञान सब कुछ धाम में चला गया. सब कुछ यहां से विलुप्त मन हो गया भगवान के साथ साथ. कड़ो नष्ट दृशाम ऐसा. कलियुग के जो युग ऐसा युग अंधकार युग है, यह सब लोग अपने ज्ञान चक्षु को नष्ट कर चुके हैं. सत्य को देखने के लिए, धर्म को समझने के लिए ज्ञान बुद्धि सब प्रकार के दृष्टिहीन है. कड़ो नष्ट दृशाम है. पुराण अर्क अधुनाउदित. इसलिए पुराण अर्क, पुराणों की सार अति सार. सार अर्क माने एसेंस. इतर को अर्क बोलते हैं. वो अर्क जो है सारांश, सार. पुराण के सार रूप में श्रीमद् भागवत को उदित किया. मानो कि भागवत के साथ साथ भगवान स्वयं और धर्म ज्ञान सब कुछ पुनर्वार सुरक्षित हो गया जगत में, उदय हुआ. ये भगवान की विशेष कृपा है. इन भागवतम इट इज एक्सप्लेन्ड, कृष्ण व्हेन he went back to his abode, Golok Vrindavan, with Krishna, all dharma and knowledge, jnana, everything as if it disappeared from this world. And especially the Kali Yuga. And this Kali Yuga is such a Yuga, dharma jnana. Kalo nashta drisam. The Kali Yuga, the people, they have lost their vision. Vision means not only eyesight. Vision means the eyes to see the dharma, to understand the satya, truth, to understand the dharma, to understand the what is good, what is bad in it, to understand shastra, to understand Bhagavan. All the vision they have lost in Kali Yuga. As a Kali Yuga people, they have no vision. Nashta drisam, kalo nashta drisam is. And in such a time, Krishna's greatest mercy, Puran Arka, the essence of all Puranas, essence of all the Vedas, Upanishads, everything, in the form of Srimad Bhagavatam only appeared in this world. Jai Grantha Srimad Bhagavatam ki. So how to understand Bhagavatam, as I told, Jao Bhagavata kiya Vaishnava sthane, Ekant Asya kar Chaitanya chal. There are so many versions of Bhagavatam, many speakers are there nowadays in Kali Yuga. So many Bhagavad speakers. But Chaitanya Mahaprabhu is saying, Chaitanya Charitamrita it is explained, that unless you take exclusive shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu, you will not understand Bhagavatam. Because who is the Acharya of Kali Yuga? Bhagavan himself appeared as Guru, Sri Chaitanya Mahaprabhu himself. Sri Bhagavatam Pramana Mamalam Prema Pumarth Mahan Sri Chaitanya Mahaprabhu Matamidam Tatradara Napara. Bhagavatam, understand Bhagavatam, you have to take exclusive shelter of Chaitanya Mahaprabhu. You have to take exclusive shelter of the dear devotees of Chaitanya Mahaprabhu so that you will understand.
Why? Because Bhagavatam, it is not explained other things, only establish the pure love. The Pancham Purusartha, the Dharma, Artha, Kama, Moksha is rejected in Bhagavatam. Only Suddha Bhakti, Krishna Prem is established, and this is Chaitanya Mahaprabhu's opinion. But now so-called Bhagavad speakers, they establishing about Mukti, about Bhukti, about comedies, about so many things there, except Krishna Prem, every subject they speak. Not Krishna Prem. That is not Bhagavatam. That's why in our Vaishnava tradition, is Bhagavatam is greatly honored. Is not for business. Bhagavatam is not used for business. Is not for your prestige name fame. Bhagavad is for Krishna Prem. You have to really, you will understand, if you take shelter of such a pure devotee in your life, you will understand the value of Bhagavatam. In the name of Bhagavatam, there is glories of Bhagavatam. What they speak the glories of Bhagavatam? They speak about Gokarna, Dundakari, how they got liberation. But in Bhagavatam, in beginning of Bhagavatam, it is called Dharma Projita Kaitavatra Parama Nirmasa Saranam Sitam. Dharma Artha Kama Moksha, the Mukti is rejected. The Chaitanya Mahaprabhu, taking the full mercy of Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami Pad is explaining in Bhakti Rasamrita Sindhu. What is saying Bhakti Rasamrita Sindhu? Bhukti Mukti Pisachi Spruha Javat Hridi Vartate Tatra Kuta Bhakti Sukham Abhidoyam Chati. As long as the desire of liberation is present in your heart, as long as the desire for the material enjoyment is present in your heart, there will be never bhakti will appear in your heart. You see? This is what Chaitanya Mahaprabhu is saying. Rupa Goswami Pad is saying. But so-called, we speak that, oh, you do Bhagavata, you will be liberated. No. Beyond that, our Gurudev is saying, beyond Vaikuntha. Liberation is up to Vaikuntha. Bhagavata is beyond Krishna Prem, is beyond Vaikuntha. You go to reach the Krishna's lotus feet. That is the goal of Bhagavata. भागवत में श्री भागवत की वास्तविक तात्पर्य समझने के लिए हम लोग को चैतन्य महाप्रभु का एकांतिक शरण ग्रहण करना पड़ेगा। जो लोग चैतन्य महाप्रभु के शरण ग्रहण नहीं किए हैं वो कभी भागवत की वास्तविक तात्पर्य को नहीं समझ पाएंगे। भागवत में जिसे प्रारंभ में बताया गया है कि धर्म प्रोज्जित कैतव अत्र कैतव धर्म प्रोज्जित। कैतव माने चीटिंग। जो धर्म के द्वारा हम लोग के वास्तविक कल्याण नहीं होता है, कुछ क्षणिक सुख प्राप्त होता है या कुछ टेम्पररी बेनिफिट लाभ होता है, उसको कहते हैं कि कैतव माने चीटिंग हुआ हमारे साथ में। चीटिंग इसी चीज को बोलते हैं जो हमको नकली चीज प्राप्त हो जाता है। जो चीज हम ढूंढ रहे हैं उसको नहीं पाते हैं, उसी को बोलते हैं कैतव, चीटिंग। तो इसलिए कोई व्यक्ति को अगर धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बतलाया जाता है तो भागवत में ये कहा गया है कि वो चीज क्या है ना, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो है कैतव धर्म। वो वास्तविक धर्म नहीं जीव का। वास्तविक धर्म क्या है? वास्तविक धर्म है प्रेम परमार्थ महान, परम निर्मत्सर। इसको कौन समझ पाएगा ना? परम निर्मत्सर। जो लोग की हृदय में मत्सरता नहीं है, किसी के प्रति द्वेष, दूसरों की उन्नति देख करके अपने अंदर में जलन होना, जिनके अंदर विद्यमान है वो भागवत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, भागवत की कृपा से वंचित हो जाएंगे। ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मेधा के द्वारा अगर भागवतम को हम लोग जान लिया है, वास्तविक भागवत की कृपा नहीं लाभ होगा। भागवत की कृपा तभी लाभ होगा, साक्षात भगवान की कृपा, हृदय में प्रेम का आविर्भूत होगा। तो यही भागवतम का तात्पर्य है, परम निर्मत्सर।
धर्म प्रजित कैतवत्र परम निर्मत्सर शरणम सतम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु पदम तापत्र उन्मिलनम। ये वास्तव वस्तु परम मंगलकारी शिवदम, और वही जन को प्राप्त होता है जो परम निर्मत्सर है, पूर्ण रूप में वैष्णव धर्म में प्रतिष्ठित है, उनके अंदर में ईर्षा द्वेष शून्य है। एक व्यक्ति, गुरुजी कहते हैं, एक व्यक्ति के अंदर में दोष रह सकता है, उसके अंदर में काम विकार रह सकता है, उसके अंदर में अनेक दुर्गुण रह सकता है, लेकिन अगर उनके अंदर में भगवान को प्राप्त करने के लिए लोभ जागृत हो गया, भगवान की कथा में उनको रुचि जागृत हो गया, तो बाकी चीजें अपने आप हो जाएगी, उसको कृपा प्राप्त हो जाएगा पूर्ण रूप में। तो ये हमारे गुरु वर्ग लोग विशेष रूप में व्याख्या किया है। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने जो भागवत सुनाया है, भागवत तो नित्य विराजित है। स्वयं महादेव जी अनंत काल से माता पार्वती, माता गौरी को भागवत सुना रहे हैं। सर्वत्र भागवत कथा चल रहा है। भगवत धाम में भी, गोलोक धाम में भी, नंद बाबा की सभा में भी भागवत कथा हो रही है। वहां भी कृष्ण की लीला कथा की गान होता है। गोपियों की समाज में भी लीला कथा की गान, प्रत्येक ब्रह्मांड में कृष्ण की लीला विराजमान है। भगवान की कथा सर्वत्र नित्य विराजित है, नित्य काल से ये है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की कथा, जो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया, वास्तविक साधारण लोग तो यही समझ रहे कि परीक्षित महाराज जब अभिशप्त हो गए थे, उनके काफी भयभीत हो गए थे, इसलिए उनको कृपा करने के लिए, उद्धार के लिए सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनाया। वास्तविक वो नहीं है। परीक्षित महाराज परम मुक्त है, पहले से समझ लो, भगवान की परिकर है, उनको भी मुक्ति होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको कृष्ण स्वयं मातृ गर्भ से रक्षा किए हैं, तो कृष्ण के गोद में वो बचपन में उनको गुजारा है, वो तो उनको कौन, उनको जो साक्षात मातृ गर्भ में कृष्ण के दर्शन हो गया है, तो उनको कौन सा मुक्ति होना बाकी रह गया? उनके अंदर कोई भय है? तो ये सब कंटेस्ट है, ये सब क्या है? भागवत को जगत में प्रकाशित करने के लिए ही भगवान की ये योजना है। इसको नहीं समझना चाहिए कि परीक्षित महाराज को मुक्ति की आवश्यकता है, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। और उस परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी भागवत क्यों कहा? व्यासदेव भी विद्यमान थे, श्री नारद मुनि भी विद्यमान थे, बड़े बड़े मुनि ऋषि भी विद्यमान थे, भागवत कथा वो लोग सुना सकते हैं, सुखदेव गोस्वामी क्यों? सुखदेव गोस्वामी साक्षात राधा रानी के परिकर हैं, और भागवत कृष्ण लीला को अगर पूर्ण रूप में कोई समझता है तो साक्षात सुखदेव गोस्वामी है। स्वयं शंकर जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं, अहम व्यक्ति सुख व्यक्ति व्यास व्यक्ति न व्यक्ति व भक्त्या भागवतम ग्राह्य न च मेधया न च टीकया। श्री सुखदेव गोस्वामी शिव जी कह रहे हैं कि अहम व्यक्ति सुख व्यक्ति, कि भागवत को मैं जानता हूं और सुखदेव जानते हैं, व्यासदेव जानते हैं कि नहीं जानते हैं मुझे पता नहीं, मुझे संदेह है। तो स्वयं वेदव्यास जी, अगर हम देखते हैं कि वो सुखदेव गोस्वामी के गुरु हैं, भगवान के वो सत्यावेश व्यास अवतार हैं, नारायण स्वरूप है, और शिव जी कह रहे हैं कि उनको भागवत पता है कि नहीं, मुझे संदेह है। किस तात्पर्य में बोल रहे हैं? कौन परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं? कौन कंटेस्ट में बोल रहे हैं? इसको इसी कंटेस्ट में बोल रहे हैं कि भागवत अर्थ कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम को शुद्ध रूप में स्थापित किया गया, ब्रज प्रेम के बारे में बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी को छोड़ करके दूसरे कोई योग्य नहीं है, क्योंकि साक्षात राधा रानी की सुख पक्षी है, और उनके गोपी स्वरूप भी है, गोपी स्वरूप में गोपी समाज में विराजमान है, और सुख पक्षी के रूप में राधा रानी के पास में विराजमान है। ब्रज लीला में जितने भी गुप्त लीला, सबको साक्षात प्रत्यक्ष दर्शी हैं।
राधा कृष्ण के पूर्ण मिलन और विरह का पूर्ण अनुभव किए हुए हैं, वही सुखदेव है। अगर मिलन और विरहात्मक प्रेम को पूर्ण रूप में अनुभव नहीं किया है, वो भागवत की प्रकाशित नहीं कर पाएगा और वो जगत में परम कल्याण नहीं करेगा। दूसरे पुराण तो है, वेद उपनिषद तो है, भागवत किस लिए है? भागवत इसलिए है ना कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए, जो वास्तविक ब्रज में ब्रज प्रेम को प्राप्त करने के लिए। अगर वो परिप्रेक्षी वो आता है तब वो सिर्फ सुखदेव गोस्वामी ही रह जाते हैं, जो कि और कोई नहीं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया और इस जगत में भागवत की अवतरणा हुआ, उसी को व्यासदेव ने स्वयं इसको लिपिबद्ध कराया। किसके द्वारा? गणेश जी के द्वारा। व्यासदेव उसको रिकॉर्ड करके उसको बोलने लगे और गणेश जी उसको लिखने लगे। वो भागवतम, हाउ इट मैनिफेस्टेड इन दिस वर्ल्ड व्हेन कृष्ण went to his abode, is completed, wind up the pastimes, disappeared from this world. All the dharma, all the religion, all the knowledge, they also disappeared. For the ultimate benefit of this world, Krishna manifested this Bhagavatam. This is the essence of Veda, Upanishad and Puranas. Because it is Krishna himself manifested through Bhagavatam. And Bhagavatam, you want to understand, you have to take exclusive shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Why? Because Bhagavatam is not a book. Bhagavatam is not a book to teach you about mukti. Chaitanya Mahaprabhu, Krishna himself, appeared in this world to distribute prem, to distribute pure love. And Chaitanya Mahaprabhu recommended to read Bhagavatam under guidance of pure devotees. That Krishna Prem will appear in your heart. Without Chaitanya Mahaprabhu, if you read Bhagavatam, there is so many speakers nowadays, so many types of speakers, but they don't touch the actual subject of Bhagavatam. They only speak about dharma, artha, kam, moksha, material benefits, liberation, social benefits, all these things. Except Krishna Prem, they give everything which are rejected in Bhagavatam. In Bhagavatam beginning, it is told, Dharma projita kaitavatra parama nirmasara saranam satam vedyam vastavam atra vastusi padam tapatra vinyanam. श्रीमद् भागवतम महामणि कृत्य की मां परिश्वरे सद्य हृदय अवरुद्धते तत्र कृति विश्वस्य वितक्षण. So here the dharma, artha, kama, moksha, so-called punya, pious activities, pious result. Material benefit, sense gratification, material benefit. Even liberation, this is rejected in Bhagavatam. Rejected. Bhagavatam is establishing Suddha Krishna Prem, Braja Prem, by which you will attain the lotus feet of Krishna in Golok Vrindavan. Not speaking about Vaikuntha planet, not speaking of you go to Ayodhya, Dwaraka or Vaikuntha. Not to go to heavenly planets. Bhagavatam, if you take shelter of Bhagavatam, you will attain the lotus feet of Krishna, Brajendra Nandan Syam Sundar. And Chaitanya Mahaprabhu is establishing this. And Chaitanya Mahaprabhu's complete mercy received by Sri Rupa Goswami Pad. And Rupa Goswami Pad, when writing the Bhakti Rasamrita Sindhu, the nectarian ocean of Bhakti Rasa, about nectar of devotion, is writing Bhukti Mukti Spruha Javat Bhukti Mukti Spruha Pisachi Javat Hridi Bhart. As long as there is two witches in the name of Bhukti and Mukti present in your heart, you never can relish the pleasure of devotion. You never attain
the Krishna Prem in your heart. You'll never understand what is devotion, what is bhakti. But so-called speakers, they're speaking about mukti in Bhagavad. They don't understand this. Rupa Goswami tell you will not ever release the bhakti. Bhukti mukti spruha, the desire for material enjoyment, the desire for material liberation as long as present, these are two witches. Balvacharya came to Rupa Goswami Pad. And he did not like this. Rupa Goswami Pad, Balvacharya told that it is, how you comparing mukti to be which? Rupa Goswami Pad told that I am, what is inspired in my heart, I have written. If you can correct it, then the Balvacharya wanted to correct Rupa Goswami Pad. Then he met Jiva Goswami Pad on the way. And Jiva Goswami Pad, the disciple of Rupa Goswami Pad, Jiva Goswami refuted all his arguments, and the Balvacharya realized, if his young Brahmachari disciple is so qualified, and where is the position of Rupa Goswami Pad? He came straight, offered Dandavat. Oh, please forgive me, I will never correct your words. But you have a very qualified disciple. The Rupa Goswami Pad understood that Jiva Goswami Pad has nicely washed him. So this is the pastimes we see. So Bhagavatam is this. So the mukti is rejected. Because by mukti, one jiva will not attain ultimate benefit. Yesterday we discussed about this. The ultimate goal of human life is to attain that Krishna Prem which Chaitanya Mahaprabhu came to give. Not other things. Don't waste your time for other things. Getting mukti or liberation, this and this. No benefit you will get. That's why Bhagavata, go to Bhagavata and hear from pure devotees. And this Bhagavata is for whom? Who will realize this? Parama Nirmatsara Saranam Sutam. Parama Nirmatsara, supremely non-envious person. Those who are having envy, enviousness for others, cannot see others' benefit or improvement or like that. Bhagavata is not for them. Jealousy is very, very, very bad thing. It will never will help you improving yourself. Intellectually, you can remember some Bhagavatam, slokas, or you can present. But that intellectually, you cannot understand Bhagavatam. It will be understood by the mercy of Krishna in your heart. That's why Vyasadeva was present. Sri Narad Muni was present, Guru of Vyasadeva. And Vyasadeva is the spiritual master of Sukadeva Goswami, and grand spiritual master also present. They are all present. So many great rishis they are present. Sukadeva Goswami only 16 years, a young boy. But they wanted Sukadeva Goswami to speak Bhagavad. Why? Who is Sukadeva Goswami? Sukadeva Goswami is the associate of Radharani, Radha and Krishna. Is present in the form of a gopi, is present in the form of a parrot, and all the eyewitness, all the pastime. He has realized all this fully, Krishna Prem, the separation, he felt the Krishna separation of Radha and Krishna, union of Radha and Krishna. Everything is condensed in the heart of Sukadeva Goswami. Krishna Prem is not an object of this world. इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने भागवत को कहा, सुखदेव गोस्वामी भागवत के वक्ता हैं और परीक्षित महाराज भागवत के श्रोता हैं. इस परीक्षित महाराज why? Parikshit Maharaj, we think that, oh, he was caused by a Brahmin boy. That's why he was worried, was disturbed that, oh, snake will bite me. How will get liberation? I will have apamrityu. People understand like this, but actually not like this. Parikshit Maharaj is nurtured by Krishna himself. He is saved by Krishna in the womb of his mother. Krishna himself always with Parikshit Maharaj.
who can do any harm to Parikshit Maharaj? For that he is hearing Bhagavatam? No. Only instrument. Krishna wanted to manifest Bhagavatam in this world. That's why he chose Sukadeva Goswami and Parikshit Maharaj as an instrument, so that the Bhagavatam will be manifested in this world for the ultimate benefit of the whole world. ये सुखदेव गोस्वामी, जैसे हम लोग अपने गुरु महाराज से सुना है, उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि भागवत पढ़ा वैष्णव स्थान है, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के एक शिष्य थे वैष्णव दास, और बहुत अच्छे सेवक, सब प्रकार की सेवा में सबसे व्यस्त रहते थे। एक बार कोई बड़े विद्वान आया उनके पास में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सारा विश्व के अनन्य विद्वान हैं, उनके बराबर कोई विद्वान है ही नहीं शास्त्र में अभी सारा जगत में। और उनके पास आया कि पंडित आए कि आपके कोई शिष्य को आप अनुमोदन कीजिए कि हमको वो भागवत के बारे में थोड़ा सा बता दे, थोड़ा भागवत के मर्म को हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके सभा में आपकी जो पारिषद है उनको छोड़ करके भागवत के बारे में अधिक कोई नहीं जानता विश्व में। ठीक है, मेरा एक ही शिष्य में रिकमेंड करता हूं, उनका नाम है वैष्णव दास। आप उनके पास जाइए और उनको मेरा संदेश दीजिए और उनसे भागवत सुनिए। तो पंडित जाकर के ढूंढने लगा वैष्णव दास मठ में कहाँ है भाई। सब जगह ढूंढते हुए लास्ट में उनको बगीचा में पाया, खेती में वो वहां व्यस्त है, अपने गार्डन में व्यस्त है। उनको जाकर के उन्हें सम्मान किया, देखा ये तो किसान है, ये क्या हमको भागवत पढ़ाएगा, वो तो विद्वान होना चाहिए, कोई पोथी लेकर के चीता तिलक लेकर के बैठना चाहिए। तो वैष्णव दास को पास ले गए और बोले कि ऐसे ऐसे बात है। तो वैष्णव दास बोले कि गुरुजी का आज्ञा तो हम अब कुछ बोल नहीं, लेकिन हमारी तो सेवा यही है, हम सुबह से रात तक इसमें बगीचा में रहते हैं, खेती में रहते हैं, यही में ठाकुर जी के लिए सेवा है, यही गुरु जी की सेवा है। तो पंडित आकर के भक्ति सिद्धांत ठाकुर पर पहुंच गए, लेकिन आप कैसे, आपके तो बहुत बड़े बड़े पंडित भी शिष्य भी हैं, आप कैसे ऐसे भक्त के पास भेज दिए जिनको भागवत किताब से कोई मतलब ही नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनको कहने लगे कि भागवत के अर्थ क्या समझते हैं आप? जिन्होंने भक्ति को जीवन में आचरण किया हो, खाली यहां नहीं रखा हो, वो अपने जीवन में आचरण में आया है, वही वास्तविक भागवत के मर्म को बतला सकता है। भागवत माने कृष्ण प्रेम, और कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा कृष्ण सेवा से। कृष्ण सेवा से बिना कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा, वही भागवत की तात्पर्य है। वो विद्वान समझ गए ये वास्तविक में और कोई जगह में आया हूं, मेरा जो उद्देश्य है यहां पूरी स्थिति नहीं होगा, ये तो हम लोग को वैष्णव भी बना देंगे। तो वास्तविक भागवत के बारे में शंकराचार्य के एक शिष्य था, उनकी सेवा, जितने भी शंकराचार्य के विद्वान शिष्य थे उस बड़े बड़े वेदांत में बहुत प्रवीण थे, संस्कृत में, विद्वान में, संस्कृत भाषा में और वेदांत की भाषा में बात करते थे। एक बार शंकराचार्य ने बैठ के वेदांत चर्चा करने के लिए उनके शिष्यों के साथ में, और सब लोग बोल रहे गुरुजी आप किसको अपेक्षा कर रहे हैं? नहीं, मैं एक ही शिष्य का प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो शिष्य अभी आया नहीं, व्यस्त है। तो अमुक शिष्य है, वो क्या कर रहा है अभी? वो जाकर गौशाला में गोबर कंडा साफ कर रहे हैं, उधर गौ सेवा में व्यस्त है, वहां फ्री होकर के आएगा तो फिर यहां बैठेगा। तो बोलने लगे शिष्य लोग कि गुरुजी वो तो मूर्ख है, वो तो कभी वेदांत का कभी समझता ही नहीं है, अब उनको वेट कर रहे हैं, हम लोग तो आपके पास बैठे हैं, आप हम लोग को सुनाइए। शंकराचार्य बोले नहीं। तो वो जब आ गए, काफी देर में आए, क्योंकि वो तो
क्लास में हरि कथा जो उनका वेदांत चर्चा रखता है होता है, तो वहां तो ज्यादा उसमें मग्न नहीं होते, ऐसे लोग की धारणा है। तो फिर जो शिष्य आ गया उधर, तो उनको शंकराचार्य जी ने उनको खड़ा कर दिया। आज तुम बोलना और ये लोग सुनेंगे। ये लोग कह देंगे तुमको कुछ पता ही नहीं है। तो गुरु जी के चरण स्पर्श करते हुए शंकराचार्य जी के और आशीर्वाद लेते हुए वो वेदांत भाषण प्रारंभ किया। और उनके अंदर में इतने शक्ति संचार हो गया, तुरंत शंकराचार्य जी की कृपा से वो अनर्गल वेदांत कहने लगा। और ये सभी लोग देख करके आश्चर्य हो गए, ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये कब हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं है। ये गुरु कृपा से संभव है। अगर भगवान किसको कृपा करना चाहेंगे, गुरु कृपा करना चाहेंगे, उनकी हृदय में भागवत प्रकटित हो जाएगा। यही रहस्य है, ये भक्ति है। भागवत जो है साक्षात भक्ति ही है, कृष्ण ही है। कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत, ताते वेद शास्त्र हैते परम महत। कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत, ताते वेद शास्त्र हैते परम महत। चारि वेद उपनिषदे जाता किछु हाया, तार अर्थ लय व्यासा करिला संचय। जाओ भागवत पढ़ा वैष्णवेरा स्थाने, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। भागवत जे नामने से जवन समा, तारा शास्त्र अथ जन्मे जन्मे प्रभु जामो। कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत। भागवत is the embodiment of Krishna Bhakti, embodiment of the mellow of Krishna Bhakti. That's why it is superior to Veda, Upanishad and Puranas. And it is as good as Krishna. See, Veda Vyas compiled this. Chari Veda, whatever is written in 4 Vedas, Upanishad, taking the essence he combined. But those who disregard Bhagavatam and they don't obey Bhagavatam, don't honor Bhagavatam, they always be punished by Yamaraj. They will never be liberated from the cycle of birth and death. Those who not honor Bhagavatam. So like this, it is explained. So I just told 2 stories, analogies to explain what do we understand by Bhagavatam. We should understand this very necessary. Once great scholar came to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was the foremost scholar at that time. Is unparalleled. Nobody was in the whole world as good as him. In very childhood, he learned all the shastras. One great scholar came to Bhakti Siddhanta Thakur, told, "Oh Prabhupada, in your assembly, there is so many learned scholars are there. And I have desire to understand the deeper meanings of Bhagavatam. If you recommend some of your disciples, then I will learn from, I prefer to learn from them, hear from them, because you directly, I am not so qualified to hear from you directly." So Bhakti Siddhanta Thakur remained silent. Then he told, "Yes, one devotee I recommend. You must go to him. But you have to search him where he is now.
His name is Vaishnav Das. So he went searching. In the mart, in temple, everybody is busy in seva. He found him in the garden, doing seva there. And Vaishnav Das, your name is Vaishnav Das? Yes, yes, my name is Vaishnav Das. What you do? Oh, I am busy since morning to night in this garden, farming and all these things. This is my seva. Then he thought, you read Bhagavatam, I have no time to read Bhagavatam. Then he told that maybe Prabhupada, Bhakti Siddhanta Sakuru maybe cheated me. Why send to him? Then he returned and told Bhakti Siddhanta Thakur that your Vaishnav Das is a farmer. He knows about gardening, farming, but I want to learn Bhagavatam. Somebody should be with book and knowledgeable. Then Bhakti Siddhanta Thakur told him, that scholar, what do you mean by Bhagavatam reading? Vaishnav Das is the embodiment of Bhagavatam. Bhagavat means Krishna Prem. And Krishna Prem will appear if you are engaged in Krishna Seva. Those who have fully practiced in their life, Bhagavatam, they are fully engaged in the service of Krishna, they are qualified to understand Bhagavatam. They know Bhagavatam. That's why they are engaged in the service of Krishna. Embodiment of Krishna Seva. So Vaishnav Das is that Vaishnava. Whatever he speak, that is Bhagavatam. Then the scholar could not argue. He thought maybe if I will stay longer here, I will have to shave my head and become one of this sannyas. Because he wanted false knowledge. Now Bhagavatam people are using to earn some prestige, to earn money, to do business, big name. But Bhagavatam is not for that. It is speaking about Krishna Bhakti. Krishna Bhakti Rasa Swarup, the embodiment of Krishna Bhakti. And Krishna Bhakti means devotional service to Krishna. It is not a knowledge only. That's why it is superior to Veda, Upanishad and Puranas. And then another story I told about Shankaracharya is one disciple. Shankaracharya was Vedanta. And Bhagavatam is this Sarva Vedanta Sar. The essence of all Vedantas. Sarva Veda Itihasanam Saram Saram Samadritam Sarva Vedanta Saram Hi Srimad Bhagavata Isyate. It is told in Shastra. Sarva Veda, all Veda, Upanishad, essence, everything is Bhagavatam, and it's the essence of all the Vedantas. And Shankaracharya was such a, Shankaracharya was a great Acharya. Incarnation of Lord Shiva. And Shankaracharya is speaking Vedanta to his students. And his disciples, those are very well learned Vedantas. And once Shankaracharya is sitting to give his Vedanta discourses and disciples are waiting. All scholars sitting, very, very great scholars, his disciples. And Shankaracharya is not speaking anything, as if he is waiting for somebody. Some of his qualified disciple inquired from Shankaracharya, "Oh Gurudev, for whom you are waiting? Everybody has come already here." No, one disciple I am waiting. Oh, such and such disciple. Without him I will not speak. Then they told, "Oh Gurudev, he is totally illiterate. He doesn't know anything. Till now he doesn't know Sanskrit alphabets fully. What he will understand Vedanta, and for him we are waiting. We are here to hear from you." But actually, that devotee, that disciple, what he was doing? He was always busy serving the cows in Gosala, cow dung cleaning, all these things. After he becomes free, then come for some time, he sits in the class. So, in the meantime, he came. So all these scholars are thinking, Guru, they were waiting for him. They could not understand the mystery of Guru's power. Then Shankaracharya came, he come here. Today you will speak Vedanta. And blessed him. As soon as Shankaracharya blessed him, all Vedanta manifested in him.
And he started speaking Bhagavatam. He started speaking Vedanta. And all the disciples, big scholars, they are so much astonished. How come he has so much power? How come he understood everything? We thought he is illiterate, no knowledge at all. So by the mercy of a Guru, everything possible. The mercy of a bona fide Guru. Bhagavatam is manifested in the heart. It's not that only intellectual somebody has to study Sanskrit and this and this. That's why this is Krishna Bhakti. By the mercy of a great devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Bhagavatam will be manifested in the heart. Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam Prema Pumartha Mahan Sri Chaitanya Mahaprabhu Matamidam Tatradara Napara. The Chaitanya Mahaprabhu, Krishna himself, Chaitanya Mahaprabhu is the most complete form of the Supreme Personality of Godhead. Our Acharyas have explained, Krishna is Supreme Lord, is complete, Purna Brahma. But Chaitanya Mahaprabhu, Parama Purna Brahma. If Krishna is mango, fruit, Chaitanya Mahaprabhu is ripened mango fruit. Krishna has the three unfulfilled desires. And Chaitanya Mahaprabhu, that desires fulfilled in him. It's complete. Is Radha and Krishna combined fully. Chaitanya Mahaprabhu himself appeared in this world to distribute that Krishna Prem. And Chaitanya Mahaprabhu's opinion, you should understand. What is Chaitanya Mahaprabhu's matam idam? Is very important to understand. What is Chaitanya Mahaprabhu's matam? Chaitanya Mahaprabhu's opinion. First one is Aradhya Bhagavan Brajasatanaya Stadhama Vrindavanam. Our worshipable is Brajandanandan Krishna. Not Narayan, not Lakshmi Narayan, Sitaram. They are his expansions. But our supremely worshipable who is Brajandanandan Shyam Sundar. Aradhya Bhagavan Brajastanaya. And his abode is Vrindavan. Tadham Vrindavanam. And Ramya Kachit Upasanadi Brajabadhu Vargyanuja Kalpita. Yesterday we discussed about it. Highest type of worship is the worship of the gopis. Gopi Prem is the highest. That is Sadhya. Sadhya Shiromani. Crest jewel of all the Sadhya perfections. Goal is Krishna Prem, Gopi Prem. That is our goal. And highest type of worship offered by the gopis. Chaitanya Mahaprabhu telling this. Ramya Kachit Upasanadi Brajabadhu Varganaja Kalpita. Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam. And Srimad Bhagavatam is that scripture which establishing, giving the praman, evidence about this. About what? About Brajandanandan Shyam Sundar. About gopis worship. About Vrindavan Dham. All is given in Bhagavatam. And Bhagavatam is Pramana Amalam. It is a spotless proof, evidence, the scripture, giving all this evidence. Prema Pumartha Maman. Chaitanya Mahaprabhu Matamidam. This is the opinion of Chaitanya Mahaprabhu. This is the conclusions of Chaitanya Mahaprabhu. Tatra Adara. Accept this in your life. No other opinions. Tatra Adara Napara. Our Acharyas explained. Don't accept any other people's opinion. Only Chaitanya Mahaprabhu's opinion. They will understand the essence of Srimad Bhagavatam. And this Srimad Bhagavatam, why Sukadeva Goswami spoke and is manifested. Puranas were there. पुराण भी यहाँ जगत में अवतीर्ण हो चुका था. सब कुछ शास्त्र यहाँ है. फिर भागवतम की क्या आवश्यकता है? अभी सरल शब्द में ये है कि भागवत में वो जो जिसे कहा ब्रजेंद्र नंदन, वृंदावन की जो मधुर लीला है, किस प्रकार कृष्ण प्रेम के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं, किस प्रकार वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, कैसे वृंदावन छोड़ करके कृष्ण एक पग बाहर नहीं जा पाते हैं.
किस कारण? वो प्रेम के कारण। कृष्ण के बिना गैया दूध नहीं देते ब्रज में। कृष्ण के विरह में किसकी चूल्हा नहीं जलता, ना माखन चलता, ना गोधन होता, हर चीज बंद हो जाता है। इसको कहां वर्णित है भागवत में? कोई शास्त्र में नहीं वर्णित है ये चीज। उद्धव संवाद आदि, गोपी गीत, भ्रमर गीत आदि, रास पंचाध्याय आदि 5 प्राण विद्यमान है जो शास्त्र में। कृष्ण जिस प्रकार कृष्ण परब्रह्म होकर भी मैया जसोदा ने उनको ओखल में बांध दिया है, राधा रानी के प्रेम में नित्य वशीभूत होकर के राधा दामोदर बने हैं। और ये ब्रज प्रेम की जो महामधुरिमा को जगत में प्रकाशित करने वाला जो ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत है, जो कि अन्य कुत्र भी नहीं है, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। चारि वेद दधि भागवत नवनीत। अगर वेद उपनिषद सब देखा जाए वो हो गया दही, और उस दही को मंथन करके जो माखन निकला है वो माखन क्या है? भागवत। चारि वेद दधि भागवत नवनीत। मथी लेन सुक खाई लेन परीक्षित, चैतन्य भागवत में लिखा है। और इसको कौन मंथन किया? ना सुखदेव गोस्वामी ने वो दही को मंथन किया। और माखन को किसको आस्वादन कराया? ना परीक्षित महाराज, और जगत को, सभी को। वो सार है। तो इस प्रकार ये विशेष भागवतम जो है वो विशेष शास्त्र है, जिसके कारण इनके अनन्य कृष्ण प्रेम, अनन्य कृष्ण भक्ति की महिमा गान किया गया है। हम लोग आगामी दिन में कुछ विशेष भागवतम की जो सारातिसार उपाख्यानों को श्रवण करेंगे, कथाओं को श्रवण करेंगे, और 2 दिन ब्रजलीला भी बोलेंगे, कथा भी श्रवण करेंगे, और बाकी हमारी गुरुवर्गों के विचारों के आधार पर दूसरे उपाख्यानों को समय के हिसाब से हम लोग श्रवण करेंगे। ये तो कथा तो अनंत है, समय के हिसाब से हम लोग सब अंत भी नहीं कर पाएंगे। और भागवतम ऐसा है कि कोई नहीं समझना चाहिए कि पूर्ण रूप में तो श्रवण नहीं किया, और पूर्ण कभी नहीं कर सकते कोई। इसमें कहा गया कि ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। सब समय ही पूर्ण है। जैसे भगवान की छोटा सा अंश अवतार भी पूर्ण कहलाता है। उस प्रकार भागवतम के अगर एक श्लोक को श्रवण किया, अगर एक ही अक्षर को श्रवण किया, वो भी पूर्ण ही माना जाएगा। पूर्ण कृपा उसमें भी विद्यमान है। ऐसे नहीं है कि पूर्ण रूप में कोई पूर्ण को भी नहीं कोई कर सकता। कृष्ण लीला का समुद्र है, भगवत कथा समुद्र, लेकिन भक्ति की महिमा हृदय में प्रवेश करना हम लोग जीवन में अंगीकार करेंगे। अगर ये संकल्प मन में उदय हो गया तो हमारा भागवत श्रवण सार्थक हो गया। तो आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथाओं को विराम देता हूं। इंग्लिश में थोड़ा सा लास्ट पार्ट को बोल देता हूं। So last few words I speak in English. As I told that there is so many scriptures there. Puranas also were there. Vedas, Upanishad present there. Why it was necessary that Bhagavatam should be manifested in this world? What is necessary? What is the exclusiveness? Bhagavatam is not exclusiveness for speaking about the liberation, mukti, who delivered from mukti. That is not Bhagavatam's goal. In Bhagavatam, the Chaitanya Mahaprabhu, we should understand what Chaitanya Mahaprabhu's opinion. If Krishna is Supreme Personality of Godhead, see Chaitanya Mahaprabhu is even the most complete form of that Supreme Lord, Krishna.
Krishna has, even Krishna is complete, but some incompleteness is there. From the rasa vichar point of view. From rasa point of view, there is some incompleteness there, therefore some unfulfilled desire remained in Krishna, which Krishna fulfilled in as Gauranga Mahaprabhu. So Gauranga Krishna is Purna Brahma, or Acharya have explained, Chaitanya Mahaprabhu is Parama Purna Brahma. Purna Param Brahma. Because Mahaprabhu is most complete form of this Supreme Personality of Godhead. And Chaitanya Mahaprabhu appeared in this world to distribute that Krishna Prem. By which Krishna Prem we can attain Krishna, we can bind Krishna in our heart, we can attain that service of Krishna in Brajendra Nandan, in Golok Vrindavan. That's why Chaitanya Mahaprabhu appeared. And Chaitanya Mahaprabhu's conclusions, Chaitanya Mahaprabhu's opinion, what is that? We should understand this. In essence, in one sloka, Srila great Acharya, Srila Rasacharya, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur is saying this. Aradhya Bhagavan Brajesh Tanayas Tadhama Vrindavanam. That supremely worshipable Supreme Lord is Brajesh Tanaya, the son of Nanda Maharaj, Nanda Nandan, Brajendra Nandan. Krishna. Our worshipable is not Lord Narayan of Vaikuntha, not Mahavishnu, not Dwarkadhish. Our worshipable is not Sitaram. Our worshipable is Brajendra Nandan, Radha Govinda, Radha Gopinath, Radha Kanta, Brajendra Nandan. Aradhya Bhagavan Brajesh Tanaya Stadhama Vrindavanam, and his abode is Vrindavan. Vrindavan is the abode of Krishna. Why? You can tell Krishna is present everywhere. Krishna is present everywhere, but not in complete form. So there is no complete love available anywhere. And Krishna is only bound in Vrindavan due to the depth of love is present in Vrindavan. That's why Tadham Vrindavanam. Ramya Kachit Upasanadi Brajavadu Varganaja Kalpita. Highest type of worship, most beautiful way of worship, highest type of worship to Krishna is the worship by gopis. Gopi Prem is the supreme. That is Sadhya Shiromani. Chaitanya Mahaprabhu Raya Ramananda Samvad telling Sadhya Shiromani. There is so many, we have goal to attain this. But highest is Gopi Prem. That is complete Krishna Prem by which we can attain Krishna completely. And the way gopis worshipped, the ideal of worship established gopis is the most complete way of worship. Ramya Kachit Upasanadi Brajavadhu Vargana Jakampita. Then next one, Srimad Bhagavatam Pramanamamalam Prema Pumartha Mahan. So Bhagavatam is that spotless Praman evidence. The scripture, Bhagavatam is that scripture where all the spotless evidence means no mistake in that evidence. Praman means complete truth. Other Puranas Vedavyas has written, but there is some question marks there. I will explain later, tomorrow, if possible, speak something on Sukadev and Vyasdev. So, Bhagavatam is spotless Puran, spotless Praman. What Praman, what evidence Bhagavatam is giving? About Brajendra Nandan Shyam Sundar, about Vrindavan Dham, about the worship of the gopis. That is Chaitanya Mahaprabhu's opinion, Mahaprabhu's conclusion. Chaitanya Mahaprabhu Matamidam, this is Chaitanya Mahaprabhu's opinion. And our Acharya is telling, don't accept any other's opinion. Only accept Chaitanya Mahaprabhu's opinion, not anybody's. You will be cheated. We are fully Gaudiya Vaishnava. We are proud to be, because most perfect Shastra is there in Gaudiya Vaishnava, not other places. Other place that is khichdi, halwa, other things. But not pure. Pure form not available.
Chaitanya Mahaprabhu giving the pure thing, and you try to understand why you become Gaudiya Vaishnava. If you don't understand the difference, you will be misguided by, oh, this is also nice, that is also nice, he is also nice. No. For us, only Chaitanya Mahaprabhu. One pointed. Then you will understand, you will be really Gaudiya Vaishnava. You will understand this. Chaitanya Mahaprabhu matamidam tatra adara na para, not other thing. Only other accept in your life, adopt in your life the opinion of Chaitanya Mahaprabhu. This is what our acharyas giving command to us. And in Bhagavatam is that scripture where fully established the Krishna, because Bhagavatam as I told, Prema Maya Bhagavata, Krishnara Sri Anga. Chaitanya Bhagavat saying that Bhagavatam is Prema Maya, full of love, full of Krishna Prema. And Krishnara Sri Anga, Krishna's, as if Krishna's divine body is Bhagavatam. Krishna's body made of pure love. Prema Maya Bhagavata, Krishnara Sri Anga. And in that Bhagavatam, all the sweet pastimes is described. In Bhagavatam, there are other scriptures Vyasdeva has written, Puranas, Mahabharata, and so on. But Bhagavatam it is told how Supreme Lord, being the Supreme Personality of Godhead, becoming a helpless baby, crying before Mother. Ready, Mother Yashoda binding Krishna, who is unconquerable, but he became conquered, bound by Mother Yashoda's pure love. It being the Supreme Lord, being always afraid of the man of Radharani. He always can defeat everyone, being defeated in wrestling match of the Sakhas, friends, Gopals, cowherd boys. How? Why this happening? Because of the love. Only Krishna, you want to get Krishna. You want to conquer Krishna. You want to bind Krishna, and try to get that Krishna prema. And this is explained in Bhagavatam, which no scripture explains this. In Bhagavatam, there is Ras Panchadhyaya, the highest pastime. Krishna became Rasik Shekhar. They explain in Srimad Bhagavatam, Ras Panchadhyaya, 5 life air of Bhagavatam. If Krishna is himself, his life air, Panchapran, is the Ras Panchadhyaya. And the Panchagitam, Pranay Gitam, Gopi Gitam, Belu Gitam, Gopi Gitam, and Jugal Gitam and Brahman Gitam. 5 life airs. This is explained only in Bhagavatam, no other scriptures. So that's why this exclusiveness, this is the speciality of the Bhagavatam, why it is the topmost. That's why we'll try to discuss some subjects from Srimad Bhagavatam, which we heard from our Gurudev, different pastimes of different devotees and Krishna dear devotees, which is explained in Bhagavatam, the way it is explained, the way our Acharya Gurudev has explained, we'll try to discuss those things. And as I told, in our thinking, we'll completely understand 1, 2 Bhagavad, but completeness you cannot never. Krishna is Vibhu. Ocean is like only you cannot see the other end of ocean, other side. That similarly, Krishna himself is Bhagavatam. But even a small person, even one verse of Bhagavatam is also complete. Even one slow word also Bhagavatam, one syllable of Bhagavatam, if one understands, then also it is complete. Only the desire should come that how I will get. When when that day will come, oh, I want to follow this footsteps of this Brajavasi. I want that devotion to attain in my life. I want to make my life successful. No other desire will remain in your life. If this greed comes hearing Bhagavatam, then our Bhagavatam hearing Sravana is successful. Om Purnamidam Purnamada Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnam Eva Avasishyate. Is Upanishad saying
that even Krishna is Parabrahma, is complete. Like the ocean is complete. Even one small person, even the expansion of Krishna, they are also complete. Always their completeness. Bhagavatam, even small person, if you listen, little bit listen, but that great comes in your life, then your life is successful. So always you have to think it is complete. Completeness is there. Completeness will be according to our devotion. If our devotion is mixed, not complete, then our Bhagavatam hearing also not complete. That's why we should attentively hear, we'll discuss, and we'll hear this Bhagavatam as explained by our Acharyas. Jai Grantha Srimad Bhagavatam ki Jai. Jai Srila Rupanuga Gaudiya Guru Varga ki Jai. Jai Srila Gurudev ki Jai. Jai Samagata Bhakta Vrinda ki Jai. Itai Gaur Premanande Hari Hari Bo. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare